हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले दो बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं, इंसिडेंस और प्रेवेलेंस। आई थिंक जितने भी सेकेंड ईयर्स थर्ड ईयर्स है उनको काफी कुछ आइडिया रहेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर्स के लिए जिनको मतलब जो अभी न्यू रिसर्च में स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है ये दो वर्ड में। तो फिर इंसिडेंस इज एक्चुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यू केसेस occurring in a defined population during a specific period of time। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली तो मैं कोई भी टाइम ड्यूरेशन ले सकता हूँ, मेरे को 1 मंथ लेना है, 2 मंथ लेना, 6 मंथ लेना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन एक स्टैंडर्डाइज अगर मैं इंसिडेंस देखूं तो इंसिडेंस हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ ईयर इनटू 1000 अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। डिफरेंस यहाँ पे है कि हम इंसिडेंस में टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रेवलेंस देखूं तो इट इज डिफाइंड एज टोटल करंट, दैट इज न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस इन अ गिवन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अपन वापस अगर हम देखें तो प्रेवलेंस का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ केसेस ओल्ड प्लस न्यू इन अ ईयर इनटू 100 अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अपन कंसिडर कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन, एंड इंसिडेंस में अपन कंसिडर करते हैं टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैंने समझो एक छोटे से कमरे में मैंने 1000 लोगों को बंद कर दिया है एंड उस 1000 लोगों के कमरे में मैंने 5 टीबी के केसेस छोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब टोटल 995 केसेस नॉन इन्फेक्टेड है एंड 5 केसेस मैंने ऑलरेडी छोड़ दिए। अब मैं वो पॉइंट से कैलकुलेट करने वाला हूँ कि इंसिडेंस क्या है एंड प्रेवलेंस क्या है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट ईयर जब देखता हूँ तो नेक्स्ट ईयर मेरे को टीबी के न्यू केसेस अराउंड 15 और मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेशन वाइज मतलब फॉर्मूला वाइज नहीं जाऊं तो बेसिकली मेरा प्रेवलेंस रहेगा पुराने केसेस दैट इज 5 प्लस 15 20 केसेस एंड इंसिडेंस मेरा रहेगा ओनली 15 केसेस। ओके, तो ये बहुत बेसिक सा अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन पे जाते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ स्टडीज हैं बेसिक। केस स्टडी जो भी अपन सिंगल केस के रिपोर्ट्स करते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सर्जरी के डिपार्टमेंट में, जो भी हमारे केस प्रेजेंटेशंस रहते हैं सिंपल वो। केस सीरीज हम मल्टीपल केसेस साथ में स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो बेसिकली आज का एम हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड अ कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में अपन एक सैंपल या पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड हम उसी पॉपुलेशन का जितना भी हमको डेटा मिलता है वो कंप्लीट पॉपुलेशन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में दो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन रहते हैं, एक डिजीज दैट इज केस एंड एक हेल्दी दैट इज कंट्रोल, वो हम कंपेयर करते हैं। मेन डिफरेंस ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। हम कभी भी डिजीज से कॉज के मतलब इफेक्ट टू कॉज जाते हैं, दैट इज डिजीज टू रिस्क फैक्टर। हम लोग टाइम में पीछे जाते हैं, टाइम में आगे नहीं जाते हैं। वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कोहॉर्ट स्टडी इज वापस हमको 2 ग्रुप्स ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं कि हम लोग टाइम में आगे जाते हैं। तो एक्चुअली केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब भी 2 ग्रुप्स देखते हैं ना उनको लगता है तो केस कंट्रोल स्टडी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो एक्चुअली क्या डिफरेंस है अपन देखते हैं धीरे धीरे। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से अपन स्टार्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली क्या रहेगा कि मैंने रैंडम कोई भी पॉपुलेशन सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने पॉपुलेशन अपने हिसाब से स्टडी के हिसाब से सिलेक्ट नहीं किया, रैंडम मैंने 2000 मेल सिलेक्ट किए फॉर लंग कैंसर विद रिस्क फैक्टर बीइंग स्मोकिंग, ठीक है। मेरे को इसमें 2 चीजें देखनी है, लंग कैंसर पॉजिटिव, लंग कैंसर नेगेटिव एंड रिस्क फैक्टर दैट इज स्मोकिंग पॉजिटिव एंड नॉन स्मोकर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे को सिर्फ प्रेवलेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी स्टार्ट करते टाइम मैंने ये नहीं देखा कि वो एक्चुअली उसको पहले से लंग कैंसर था कि वो पहले से स्मोकर था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। मेरे को सिर्फ मेरे पास एट टाइम ऑफ स्टडी, एट स्टार्ट ऑफ टाइम मतलब स्टार्टिंग के स्टडी में मेरे पास सिर्फ 2000 लोग थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे को तुमको मतलब उनको स्क्रीन किया एंड उनको उनसे निकाला कि उनको लंग कैंसर है कि नहीं है एंड दे आर स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, ठीक है। तो अब हम जाते हैं केस कंट्रोल स्टडी में। तो केस कंट्रोल स्टडी में मैं पॉपुलेशन खुद से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने मैंने वही सेम जो डेटा है, सेम स्टैटिस्टिक्स है मैंने रखा है और तीनों स्टडीज क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। तो वो हम सेम इसमें करेंगे। तो हम देखेंगे कि 500 हमारे पास लंग कैंसर पेशेंट्स थे एंड 1500 हमारे पास जिसमें लंग कैंसर प्रेजेंट नहीं है, मतलब लंग कैंसर नेगेटिव पेशेंट्स थे, ठीक है। तो वो कंट्रोल पेशेंट्स हो गए एंड दी आर केस कंट्रोल। ओके, तो बोथ ग्रुप्स आर कंपेयर्ड रिगार्डिंग टू द एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर्स
एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट ईयर 2020 में मेरे पास दो पॉपुलेशन है। मेरे पास 500 लंग कैंसर पॉजिटिव है, 1500 लंग कैंसर नेगेटिव है। ठीक है, मैंने उनसे, उनके केस रिपोर्ट से, उनके पास डेटा से, उनसे हिस्ट्री लेकर सारी चीजें पता कर कर मैंने उनसे पिछले 5 साल की हिस्ट्री ली। उनसे पता किया कि उन्होंने कितना, मतलब जो अपन स्मोकिंग में एक्चुअली देखते हैं कितने पैकेट ईयर्स उसने स्मोक किया, क्रॉनिक स्मोकर। तो वो सब जो हम चेक करते हैं वो अपन ने चेक किया। हम ईयर 2015 का डेटा हमने, मतलब बेसिकली ईयर 2015 नहीं बोलना चाहिए, पिछले 5 साल का हमने डेटा निकाला। एंड हमको पता चला कि जो 1500 लंग कैंसर पॉजिटिव थे उसमें से 400 वर स्मोकर्स एंड 100 वर नॉन स्मोकर्स। एंड जो 1500 लंग कैंसर नेगेटिव थे तो उसमें 600 वर स्मोकर्स, 900 वर नॉन स्मोकर्स। जो मैंने येलो से मार्क किया है वो हमारा स्टार्टिंग पॉपुलेशन था। ठीक है, हमने उसको सिलेक्ट किया, हमने उसको खुद से सिलेक्ट किया। वो हमको ऐसे इंसिडेंटली हमको फाइंडिंग नहीं आई कि वो 500 थे एंड लंग कैंसर पॉजिटिव फाइंडिंग थे एंड लंग कैंसर नेगेटिव, मतलब वो हमने खुद से सिलेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कोहॉर्ट स्टडी में। मेन डिफरेंस क्या है कि वहां पे हमने केस कंट्रोल सिलेक्ट किया एज डिजीज एंड नॉन डिजीज। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है कि नॉन एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो बोथ ग्रुप्स आर टेकन अप एंड फॉलोड अप फॉर 5 years एंड स्क्रीन फॉर लंग कैंसर। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी हम टाइम में आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ईयर 2020 में अगर मैं देखूं, हाँ, तो ईयर 2020 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 100 स्मोकर्स, सॉरी 1000 स्मोकर्स हैं एंड 1000 नॉन स्मोकर्स हैं। मैंने उनका 5 ईयर का फॉलोअप किया, उनका स्क्रीनिंग किया, उनका डायग्नोसिस जो भी मैं आगे जाके, मतलब पूरे 5 ईयर्स में मैं कंसिडर करता हूँ। ईयर 2025 में मैंने जब चेक किया तो मेरे को पता चला कि जो 100,000 स्मोकर्स थे उसमें से 4000 आज लंग कैंसर पॉजिटिव है एंड 600 अभी लंग कैंसर उनको नहीं हुआ है। एंड सिमिलरली जो नॉन स्मोकर्स थे उसमें मेरे को मिला कि 100 वर लंग कैंसर पॉजिटिव एंड 900 वर लंग कैंसर नेगेटिव। वापस जो मैंने येलो में मार्क किया है वो हमने सिलेक्ट किए थे, हमने जो हमारा सैंपल था। ठीक है, अभी हम एक्चुअली केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी में फाइंड क्या करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम देखा जाए तो दो चीजें हैं जो है में, एंड रिलेटिव रिस्क है कोहॉर्ट स्टडी। ऑड रेशियो में, ऑड रेशियो लॉजिकल सेल्स अपॉन नॉन लॉजिकल सेल्स। मैंने ये, मतलब एक्चुअली कैसा देखा जाए, लॉजिकल सेल्स क्या है कि उसको ही हैज अ रिस्क फैक्टर एंड ही लंग कैंसर पॉजिटिव, तो लॉजिकल सेल। एंड दूसरा लॉजिकल सेल क्या रहेगा कि वो उसके पास रिस्क फैक्टर नहीं है एंड वो लंग कैंसर नेगेटिव है, तो वो लॉजिकल सेल हुआ। तो बेसिकली हमने क्या किया, 400 इंटू 900 किया एंड अपॉन हमने जो नॉन लॉजिकल सेल्स 100 इंटू 600 किया, तो हमको जो ऑड्स रेशियो आता है वो 6 आता है। ठीक है, अब ये जो 6 रेशियो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लंग कैंसर केसेस हैव 6 टाइम्स मोर चांस ऑफ रिपोर्टिंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, इसका मैं वाइसा वर्सा नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब केस कंट्रोल स्टडी के अकॉर्डिंग मैं वाइसा वर्सा नहीं बोल सकता हूँ कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके पास 6 टाइम, उनका मतलब जो भी स्मोकर्स है उनके पास 6 टाइम हायर रिस्क है उनको लंग कैंसर होने। वो मैं तभी प्रूव कर सकता हूँ अगर मैंने कोहॉर्ट स्टडी में सेम डेटा मैंने फाइंड किया होगा। लेकिन ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी में हम देखते हैं कि रिलेटिव रिस्क है। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क में क्या है, हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड। तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे पास 400 डिजीज है एंड टोटल 1000 हमारा स्मोकर्स था। ठीक है, तो वो 0.4 आएगा एंड दिस इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज 0.1 आएगा। तो यहाँ पे मेरे को जो रिलेटिव रिस्क मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है 4 स्मोकर्स। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एंड जितने भी स्टडीज रहते हैं, तो ये सारे डेटा हमको कलेक्ट कर करके ये क्लिनिशियंस को बहुत हेल्प करता है। इसमें दो और फाइंडिंग्स, दो और स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो हम करते हैं, दैट इज एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड नॉन पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, वो मैं बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ उसमें होता क्या है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है कि हम परसेंटेज निकालते हैं कि इस रिस्क फैक्टर का डिजीज कॉज करने में कितना परसेंटेज है, मतलब कितना परसेंटेज चांसेस है कि यही रिस्क फैक्टर डिजीज कॉज कर रहा है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है कि अगर मैंने समझो रिस्क फैक्टर हटा दिया पॉपुलेशन से तो कितना परसेंट डिजीज का
इंसिडेंस कम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज मेन, एक चीज देखी कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें हमने प्रेवेलेंस फाउंड किया। ठीक है, सिमिलरली जो कोहॉर्ट स्टडी है इसमें हमने इंसिडेंस फाइंड किया। ठीक है, तो फिर आगे हाँ एक और चीज मेरे को बोलना था, ये सब जो है ये बहुत आइडियल सिनेरियोज हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट रहते हैं वो अभी शिरीष कवर करने वाला है। तो एक्चुअली क्या रहता है, हमारा जो सैंपल कलेक्शन एंड उसमें बहुत सारे बायस एंड वो सबको प्रिवेंट करने के लिए हमको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये एकदम आइडियल सिनेरियोज है, जो बेसिक्स है मैंने तुमको वो बताया। आगे शिरीष जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो एक्सप्लेन करेगा। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो ठीक है। तो अभी जैसे निखिल ने बताया कि बेसिकली आज जो प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं उसमें मेनली एक कोहॉर्ट स्टडी होने वाली है। सो उसका बेसिक्स निखिल ने बताया। तो अभी जो दोनों प्रेजेंटेशंस है उसमें जो बेसिक बायोस्टैट्स यूज हुए होंगे उसका मैं बेसिक्स कवर करूंगा। सो स्टार्टिंग विद निखिल ने काफी हद तक इंसिडेंस प्रेवलेंस कवर किया। So as he said, the major difference of it is कि इंसिडेंस से रिस्क पता चलता है कि कितना ज्यादा है। और एक और चीज ये है, वी नीड टू सी इन द डिनोमिनेटर हियर इन द इंसिडेंस कि इंसिडेंस में जो हम पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं दैट नीड्स टू बी कंपल्सरीली एट रिस्क। कि अगर मैं किसी चीज का इंसिडेंस निकालना है तो पहले मेरे को उसके रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं और उस रिस्क से वो डिजीज होने का चांसेस कितना है करके आई फाइंड आउट थ्रू इंसिडेंस। बट प्रिवलेंस में मैं रिस्क ग्रुप को नहीं उठाता हूँ, जितना भी टोटल पॉपुलेशन है मैं जो भी पॉपुलेशन को डिफाइन करता हूँ उसमें मैं कोई बायस नहीं करूंगा, उसको पूरा रैंडमली सेलेक्ट करके उसमें मैं ढूंढूंगा कि करंटली उसमें केसेस कितने हैं। ठीक है, तो अभी इसका मेजोरिटीली ये दोनों चीज ढूंढने के लिए हमारे स्टडी डिजाइन से अलग हो जाते हैं। अगर हमको प्रेवलेंस ढूंढना है तो हम कभी भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रेवलेंस हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ढूंढते हैं और अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। ठीक है, प्रेवलेंस मुझे कोहॉर्ट से भी मिलेगा, बट यूजुअली अगर किसी को प्रेवलेंस निकालना है तो वो देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी करके प्रेवलेंस इजीली मिल जाता है। बट इंसिडेंस निकालने के लिए मैं कभी क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि नए केसेस कब आ रहे हैं। तो वो नए केसेस लाने के लिए मुझे पेशेंट्स को फॉलो अप करना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि जो रिस्क में थे उसमें से नए केसेस कितने आते जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस दैट वी नीड टू नोट। Another thing that we will be seeing today is the incidence ratio। कि ये incidence ratio क्या होता है। So suppose again we will compare ये lung cancer वाला thing only, ये सबसे famous example है। So suppose कि मेल्स हमने कंपेयर किया कि मेल्स में इंसिडेंस निकाला, फीमेल्स में इंसिडेंस निकाला। तो मेल्स में आया 20, फीमेल्स में आ गया 30। तो एक इंसिडेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि हम दोनों का इंसिडेंस कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि किसमें वो चीज मतलब वो डिजीज होने का चांस ज्यादा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो विल जस्ट डिवाइड द रेशियोज एंड वी विल इंटरप्रेट एज फीमेल स्मोकर्स। अभी हमें यही बोलना है फीमेल स्मोकर्स नॉट फीमेल्स, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन क्या था एट रिस्क। एट रिस्क क्या है, स्मोकर्स। अगर हम इन जनरल पॉपुलेशन लेते जो स्मोक नहीं कर रहा है देन वो अलग हो जाता है इंटरप्रिटेशन। बट अभी हम बोलेंगे सिर्फ फीमेल स्मोकर्स एट 1.5 टाइम्स ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर, मतलब वो लोग को ज्यादा चांसेस है फॉर डेवलपिंग लंग कैंसर। ठीक है, this is the thing that we will be seeing in today's presentation related to the cohort study। एक और चीज मुझे बताना था इन द कोहॉर्ट स्टडी की, एक कंफ्यूज होती है कि एक रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और एक केस कंट्रोल स्टडी में क्या फर्क है। अभी निखिल ने बोला कि केस कंट्रोल रेट्रोस्पेक्टिव है और कोहॉर्ट प्रोस्पेक्टिव है, बट रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट भी होता है। सो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में क्या होता है कि हम रिस्क से ही चालू करते हैं, बट हम वो रिस्क आज से चालू नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि वो पेशेंट एट रिस्क 5 साल पहले कहाँ था वो। हम जब पेशेंट्स को सेलेक्ट कर रहे रहेंगे हम डिजीज लोगों को नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, हम रैंडमली लोगों को ढूंढेंगे, उनके केस रिकॉर्ड सर्च करेंगे और देखेंगे कि 5 साल पहले वो स्मोक कर रहा था क्या। ठीक है, और फिर हम उसे आज या और 5 साल आगे तक भी फॉलो कर सकते हैं
और देखेंगे कि उसको डिजीज हो रही है कि नहीं। सो इससे बेसिकली टाइम बचता है, क्योंकि कोहॉर्ट में बहुत टाइम जाता है करने को, अगर हम डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करें। तो इसलिए कोई लोग रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो रिस्क रिस्क पॉपुलेशन को बैक इन टाइम ट्रेस करते हैं, उनको ढूंढते हैं, और फिर वो आज कहाँ पे है करके उन्हें ट्रेस करते हैं। ठीक है, सो ये एक मेजर डिफरेंस हमको नोट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम कोहॉर्ट स्टडी में क्या स्टैट्स यूज करते हैं। ठीक है, अभी एक और जो अभी राघव प्रेजेंटेशन करेगा, उसमें काफी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी है। सो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सो उसमें समझने के लिए बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। सो टू गिव यू एन सिंपल आइडिया, अगर मैं कोई भी पूरा एक डाटा कलेक्ट करूं, ठीक है, सपोज मैं ब्लड प्रेशर का डाटा कलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं 15-20 लोगों में ब्लड प्रेशर कलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं कब बोल सकता हूँ कि मतलब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो कैसा होता है ना, ये बहुत सारी स्टडीज की है, और जब पता चला है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नंबर आया है, कि मतलब अभी जो हम 120 सिस्टोलिक बोलते हैं, वो 120 इस रेंज में आया है, ये वाली रेंज में, हमारे जो बेल शेप का बीच का पार्ट है ना, उसमें आया है। सो इट स्टेट्स की अभी ये नॉर्मल है, ये अंडर द नॉर्मल है। जब ये यहाँ पे चला गया ना, अगर मेरे जो एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर्स होते हैं, हाई सिस्टोलिक प्रेशर्स लाइक 170 180, वो यहाँ पे आ जाएंगे। नॉर्मल मतलब कि मेरे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या दिख रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम बेल शेप कर्व बोलते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, टेल्स होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया एक मेरे जनरल पॉपुलेशन का व्यू। बट अगर मैं कोई भी सैंपल को भी लेता हूँ, तो उसमें भी मेरा जो डेटा आएगा, उसको जब मैं प्लॉट करूंगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व, कि मतलब सबसे ज्यादा क्या आया है। ठीक है, वो मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा मेरे कहाँ आ रहा है, कि अगर मैं बहुत सारे ब्लड प्रेशर्स लूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा मीन फिर भी बीच में लाई कर रहा है, मेरा मीन बीच में लाई करेगा, और उसमें से स्टैंडर्ड डिविएशंस होंगे। सो व्हाट डज अ स्टैंडर्ड डिविएशन मीन इन द लैंग्वेज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, कि मेरा जो दूसरा डेटा है, मतलब मेरे जो बाकी डेटास है, वो मीन से कितने दूर है। सो हर एक, ये दिस इज अ 0.5 स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिविएशन, दिस इज अ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर, मतलब मेरे कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर है मेरा डेटा। और एक अच्छी स्टडी वही मानी जाती है जो थोड़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब जिसका रेंज अच्छा हो, बट उसका मीन बीच में आ रहा हो। तो अभी अगर मेरा मीन यहाँ पे आ जाता, ठीक है, वो मैं स्क्यूनेस में बताऊंगा, बट अभी सपोज ऐसा याद रखते कि अगर यहाँ पे आ जाता, तो वो मेरा कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रह जाता। सो एक हमें चीज याद रखनी है इसमें, क्या, कि स्टैंडर्ड डिविएशंस कैसे देखते हैं, कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कि वो मीन से कितना दूर है। एक और चीज जो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बहुत इजीली समझ सकती है, दैट इज माय कॉन्फिडेंस इंटरवल, और पी वैल्यू जो हम बोलते हैं, ये दोनों चीज है ना, सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही आई है। सो ये अभी यहाँ पे देखो 95.44 लिखा है, राइट। सो जब भी मैं बोलता हूँ कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो ये है। तो अगर मैं कोई भी डेटा बोलूँ कि लाइक अगर सपोज मैं किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, और उसको मैंने एंटी हाइपरटेंसिव्स दिए, तो उसका बीपी रिडक्शन सपोज 20 mmHg से हुआ। सो मैं जब ये बोल रहा हूँ, तो मैं उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई और ये सेम स्टडी करे, तो सपोज वो इंटरवल आया, मेरा मेरा वैल्यू क्या आया था, 20 से डिक्रीज होता है। सो मैं इंटरवल बोल सकता हूँ कि 17 से लेकर 25 तक इज माई कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो मैं बोलता हूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई और भी ये स्टडी करेगा, तो उसकी वैल्यू 17 से 25 के बीच में ही आएगी। ठीक है, दैट इज वन थिंग दैट वी नीड इंटरप्रेट थ्रू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसलिए हम जो 5% पी वैल्यू लेते हैं, वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। और जो मतलब हम बोलते हैं कि p इज लेस देन 0.05, कोई सिग्निफिकेंट लेना, उसका मतलब क्या है, कि देर इज लेस देन 5% चांस कि मुझे जो रिजल्ट आया है, कि सपोज जो एग्जांपल लिया था कि 25% रिडक्शन इन बीपी, वो सिर्फ 5% उसका चांस है कि वो बाय चांस हुआ है। मैं 95% कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे ड्रग ने किया है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड 5% जो हम लेते हैं अल्फा एज दी पी वैल्यू। ठीक है,
सो ये दोनों चीज काफी क्लियर होनी चाहिए. एंड दिस इज हाउ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लुक्स लाइक. इट शुड बी अ बेल शेप्ड कर्व. ओके. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्टैटिस्टिक्स लुक. उस पर इतना देखते नहीं है. सो आज अभी हम राघव के प्रेजेंटेशन में एक टर्म सुनेंगे लाइक सैफिरो विल्क्स टेस्ट. सो उसमें क्या होता है कि अभी जितने भी हमने टेस्ट के नाम सुने हैं ना, कि जैसे ये पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, एनोवा, ठीक है, अभी ये सब है ना हम तभी अप्लाई कर सकते हैं. इनका सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि मेरा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो मैं इनको अप्लाई नहीं कर सकता. इन सारे टेस्ट को बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, जो भी मैंने एनलिस्ट किए, पीटी टेस्ट, एनोवा वगैरह. सो a parametric test can only be applied when when it is distributed normally. So if it is not distributed normally, so how do we check if it is distributed normally or not? So then we use this test. इसको सिंपली एसपीएसएस पे जाके कॉलम सेलेक्ट करके क्लिक करना होता है. क्लिक करने पे देन इट टेल्स कि वो कितना मी सेंटर से डिविएटेड है. कि मतलब अभी देखो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है. मतलब डिविएशन को बेसिकली स्क्यू बोलते हैं, कि मतलब स्क्यूड है. तो अभी ये नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. तो जब भी मुझे पता चला कि मेरा डेटा स्क्यूड है तो मैं मेरा पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं कर सकता. तो तब मुझे उसके एनालोगस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने पड़ेंगे, जो लास्ट टाइम वरुण ने डिस्कस किए थे. कि जैसे अभी अनपेयर्ड टी टेस्ट था, उसका मैं मैन विटनी यू टेस्ट यूज करूंगा. अगर मेरे को वन वे एनोवा यूज करना था, उसकी जगह मैं क्रुक्सल वैलिस टेस्ट यूज करूंगा. तो उसके हिसाब से मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मेरा टेस्ट डिसाइड होता है. ठीक है. तो इसलिए ये लोग ने पहले ये टेस्ट यूज किया टू डिसाइड कि उनको आगे कौन सा टेस्ट यूज करना है. ठीक है. सो वंस दिस इज डन, देन अभी जो उनकी आगे स्टडी होगी उसमें भी मल्टीपल ग्रुप्स है. अभी मैंने भी एक मल्टीपल ग्रुप्स का एग्जांपल लिया है. सपोज अगेन बीपी मेजरमेंट का ही लिया है. तो अगर मैं 4 ग्रुप्स लेता हूँ, रैंडमली ले लो, मतलब किसी भी बेसिस पे, एज ग्रुप के बेसिस पे सपोज. ठीक है. ये सब मैंने रैंडमली नंबर्स लिखे हैं तो नंबर्स पे मत जाना. तो अगर मेरे को इन चारों ग्रुप्स का ये जो बीपी आया है मुझे उनको कंपेयर करना है. ठीक है. अगर मेरे पास सिर्फ ये दो ग्रुप होते, 1 और 2, तो फिर मैं सीधा अनपेड टी टेस्ट लगा देता, क्योंकि मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और मेरे सिर्फ दो ही ग्रुप है, तो मैं अनपेड टी टेस्ट लगा दिया. बट जब दो से ज्यादा ग्रुप्स हो जाते हैं तो मुझे वन वे एनोवा लगाना पड़ता है टू सी. अभी देखो ये सब क्या है, ये सब इंटरवल स्केल्स है, सबके फंडामेंटल यूनिट्स में है, मतलब एमएमएचजी है ब्लड प्रेशर. और मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, ये ग्रुप से. तो ग्रुप क्या है, मेरा नॉमिनल डेटा है और ये सब मेरे इंटरवल स्केल डेटा है. तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस टू अप्लाई एनोवा फिट्स हियर. एंड देर आर अ फ्यू मोर कंडीशंस जो राघव उसके पीपीटी में डिस्कस करेगा. लाइक उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है तो ही डिस्कस देयर इटसेल्फ. So here, since there are 4 groups and we need to compare them and find if there is a significant difference between them or not, we will apply ANOVA. ठीक है. अभी यहाँ पे ये दोनों ग्रुप में significant difference आने का ज्यादा चांस नहीं है, बट शायद फर्स्ट और 4 में आ सकता है. सो वो एक एक ग्रुप के बीच में कंपेयर करके बताता है 1 और 2 के बीच में है कि नहीं, 1 और 3 के बीच में है कि नहीं. तो दैट इज हाउ यू गेट द रिजल्ट्स. ओके. उसके अलावा एक और होता है रिपीटेड मेजर एनोवा. तो अभी एनोवा का मतलब तो सिंपल है कि मुझे दो से ज्यादा के बीच में ही कंपेयर करना है. बट अभी वन वे वाले में क्या था कि मैं अलग अलग ग्रुप्स में कंपेयर कर रहा हूँ. अभी इसमें कैसा है कि मैं एक ही ग्रुप है उसको मैं बार बार फॉलो अप कर रहा हूँ. सो इसमें क्या हो गया, इट इज सिमिलर टू अ पेयर टी टेस्ट बट मोर देन 2 टाइम्स. पेयर टी टेस्ट में मैं स्टार्ट और बाद में कंपेयर करता हूँ, राइट. अभी मैं रिपीटेड मेजर एनोवा में क्या कर रहा हूँ, मैं दो से ज्यादा बार कर रहा हूँ. तो सपोज अगर मैं किसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज इनालेप्रिल दे रहा हूँ, और उसको मैं 3 वीक के लिए फॉलो अप कर रहा हूँ, और हर वीक के एंड में मैं उसका ब्लड प्रेशर मेजर करके चेक कर रहा हूँ, और मेरे को कंपेयर करना है कि वो वीक, कौन से वीक तक उसका सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है. मतलब कि इनालेप्रिल से सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रहा है क्या, और वो कितने वीक के बाद हो रहा है. तो वो मुझे चेक करने के लिए मुझे रिपीटेड मेजर एनोवा मारना पड़ेगा, ताकि मुझे समझे कि इसमें से कौन से ग्रुप का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज बेसिक्स. अभी इसके बाद आज के डिस्कशन में जो भी डाउट्स है, मतलब मैंने और निखिल ने तुम्हें जो भी बताया है वो पोस्ट क्लब पूछो. लाइक इवन द प्रेजेंटर्स वुड बी देयर टू हेल्प, बिकॉज उनके ही जर्नल से उठाया है ये सब. सो तब तक रुको, जो भी डाउट्स होगा तभी पूछना. ठीक है. सो नाउ ओवर टू निखिल टू स्टार्ट द जर्नल क्लब. Thank you, Shri. So
Okay, so we'll start. Good evening, respected faculty members and members of the audience. I'm Nikhil Santani, the Aspire Journal Club coordinator. I would like to start today's meeting by telling you the rules of the presentations. The topic of the presentation should be within the scope of health sciences. Presentation time is maximum 15 minutes, followed by a 15-minute discussion, which would be open for questions, comments, and feedback from faculty members as well as students. The articles were selected after thorough literature search by the presenters in the guidance of subject mentor and were approved by them. It is a sincere request to all the attendees of the journal club to keep their mics off while presentation is going on. No one is allowed to speak in between. Those who have any doubts can wait for the presentation to get over and can ask directly or type in the message box. So we'll start with the first presentation of the day. By Raghav Sorry. Paranjape from first year. Yes. Thank you very much. Guys, please tell me if my screen is visible to all of you. Now. शिरीष हाँ बोल देना अगर है visible तो. हाँ. Okay, so I'll start. Good evening, everyone. My name is Raghav Paranjape. I'm from First MBBS. And the topic of my presentation, as the slide says, is imbalanced corticospinal and reticulospinal contributions to spasticity in humans with spinal cord injury. Let's have a small introduction first. What exactly is spasticity? I'll use informal words so that it's easier to understand for all of you. Spasticity. Okay, before spasticity, what is spinal cord injury? SCI is anything that causes damage, trauma, or even a non-traumatic cause, but basically causing damage to the spinal cord, because of which the motor and sensory transmission of signals is disrupted. And there are two types of an SCI, a complete and an incomplete SCI. This is the broad classification. In a complete SCI, what happens is the transmission of signals, the two-way transmission is completely disrupted. There is no transmission. Whereas in an incomplete SCI, up to various extents, the transmission is still present. It may be altered, but it is still present. So that's an incomplete SCI. It's pretty straightforward. So talking about what spasticity is a combination of paralysis, hypertonia, and an hyperactive muscle stress reflex. So you can, I think those three words are quite easy to understand. And spasticity is one of the most common symptoms that is seen in SCI, whether it be complete or incomplete. So this study deals with spasticity and an incomplete spinal cord injury, not the complete ones. So going ahead, the rationale of the study, okay, there are 2 points that the authors of the study realized. One is that people with an incomplete SCI, they may have some residual descending voluntary drive. What is this? It means that the major descending pathways, the corticospinal, reticulospinal, etc., these pathways may they have a high prevalence of spasticity, these patients. Why? And that may be linked to the functioning of these two tracks. The spasticity present may be linked to the functioning of these two tracks. And another point that they realized is that damage to these motor pathways has been associated with the development of spasticity. So now what this is, as all of you must have realized, it's quite vague. The exact mechanisms for why spasticity occurs in patients with incomplete spinal cord injury is not known. For patients with complete spinal cord injury, the straightforward explanation is there is the release of inhibition of the muscle spindle reflex. So there is spasticity in all the muscles below the level of the injury. But what about an incomplete SCI? So this study aims to find out the cause to some extent for spasticity seen in incomplete SCI patients. So these are the objectives of the study, main objectives, to find out which descending motor pathways are playing a role, and to find out that which individual descending pathway contributes how much to causing spasticity in an SCI.
So what these authors did is that these people laid down a hypothesis, as is required in any study that you perform. They laid down a hypothesis, and that is that individuals with incomplete SCI and with spasticity show weak corticospinal and strong reticulospinal outputs. Now, this is a surprising hypothesis because we all think that the corticospinal tracts are the main motor descending pathways. They are they cause all the voluntary actions in our body. So this was an interesting hypothesis that the contribution of spasticity is stronger from the reticulospinal tract and less from the corticospinal tract as compared to participants with no or low spasticity as well as the control subjects. We'll, and to prove or disprove this hypothesis, this study has been done. That is basically what this study is. So what they did is they collected 30 patients with incomplete SCI and specifically motor incomplete type. As I said, that incomplete means there is some the transmission of signals is not completely disrupted. So what motor incomplete means is the motor signals are still being sent down to some extent. And the ethical clearance was given. There were the number of patients were 30 and 15 age matched controls were taken as well. We'll see why this is not very appealing of the control number of controls and cases. We'll see it later. Now, coming to the important part of the study, which might get a little boring, so hang in there. Firstly, so we'll talk about the parameters studied by all these authors in the patients, in the participants, the controls as well as the tests. Number one being modified Ashworth scale. If I have to tell you this in as few words as possible, this scale is used to measure the amount or extent of spasticity present in a muscle. The muscle, if you see the image, this is the position in which the patient is present or the control is present, and they are checking the score from the scale of the quadriceps muscle. Quadriceps muscle is the main muscle involved in the extension of the knee. So this is the muscle that they are checking. So yes, another point that you should remember is that the patients who can voluntarily contract their quadriceps are chosen. If they couldn't do that, then they are not ideal tests. So the muscle that they are testing is the quadriceps. And based on certain rules that the Ashworth scale mentioned, there are 6 points in this ordinal scale. 0, 1, plus 1 can be grouped as no or low spasticity, means the patient has no or less spasticity. And the scores 2, 3, 4 indicate that the spasticity present is of high amount. The next parameter studied is the motor evoked potentials. Or what are motor evoked potentials? There is a process called transcranial magnetic stimulation. What that basically means is I put a cap on my head, a metallic cap, and then they magnetically stimulate the brain cortex or any area in the brain cortex to evoke a movement in the body. So what they're doing here is they are stimulating the area that represents the leg, specifically the quadriceps muscle, and then they are measuring various other factors once the leg contracts. So one of the parameters that they are measuring is the motor evoked potentials. So when I stimulate the area of the leg that represents the quadriceps muscle via transmagnetic stimuli, then a certain potential is developed, which is thought to be developed in the corticospinal tracts, mind you. So this motor evoked potential is measured, and it is okay. We'll see what it signifies later on. Another thing is active motor threshold. Active motor threshold is simply the threshold amount of transmagnetic stimulation that you need to cause a movement or a motor evoked potential. Another interesting parameter that they studied was the maximal voluntary contractions. Now, again, this is straightforward, whatever the three words mean. Maximal voluntary contractions. The movement that they are asking the patients to do is an isometric isometric contraction of the quadriceps muscle. What this basically means is you can try it yourself right now. If you want to extend your knee,
Then what? Try to extend your knee when your left foot is placed on your right leg. So you're giving resistance to the movement, and you'll see that the quadriceps bulges out. So this is the isometric expansion, knee expansion or isometric contraction of the quadriceps muscle. And what they'll do is they'll measure the EMG recordings that are generated when you are carrying out this isometric expansion. So that is maximum voluntary contractions. Next, this is the most interesting parameter that they have studied, and it's called the start react response. This response is based on the startle reflex. What is the startle reflex in human beings? The startle reflex involves the cochlear nerve, then it involves the reticular system, and it involves the motor alpha motor neurons. So the first, if you see these parameters that we study, the MEPs and the MVCs, these are checking the functioning of the corticospinal tracts. Whereas the a start react response, which is based on the functioning of the startling reflex, is uh, it is used to measure the functioning of the reticulospinal tracts. In short, if I had to tell you in short, so what they do is, they took an LED, they placed it in front of the patient, and they told the patient that when the LED bursts into the light, then you have to contract your muscle as hard as you can. What they also, so the reaction time, what is reaction time? It is the time between the LED, from when the LED starts till the EMG records any recording when the patient contracts the muscle. So there is always it's like a latent period. So I see the light and then I'm going to contract the muscle. So the time in between those two is the reaction time. Now, so uh, when the LED is used without any other stimulus, it is called the visual reaction time. Now, when I couple this visual stimulus with an auditory stimulus, it becomes a visual auditory reaction time. So that is VART. Visual reaction time is VRT. Visual auditory reaction time is VART. And when I couple this visual stimulus with a startling stimulus, maybe a loud sound of around 120 decibels, that's uh, the stimulus that they used. That becomes the visual plus startle reaction time. I hope I'm clear. That is VSRT. So these three parameters were measured to check the start react response. And as you can, so if you remember again, when you suddenly hear a loud sound, you get startled, and it is involving the pontine reticular nuclei are involved in this pathway, and the reticulospinal system is involved in this pathway. And what is observed is that the reaction time decreases when a startle response is coupled with a visual stimulus. So they used all these three parameters to calculate something known as reticulospinal gain. What did I say? I said that the reticulospinal system is involved only when a startling stimulus is coupled with a visual stimulus. So that is because it activates the startle reflex. So they are checking the reticulospinal gain, which is the formula. It's quite easy. I don't need to read it out for you guys. And then they have used it later on. So yeah. So now, as Shirish already explained in the pre-club meeting, Shapiro-Wilks test is used to check whether the data that we have collected is normally distributed or not. And the ANOVA, one-way ANOVA, repeated measure ANOVA, any ANOVA can only be used if the data is normally distributed. Another another thing that one-way ANOVA requires is that okay, what is ANOVA? It is analysis of variance from mean, how much deviation there is, variance. So, and one-way ANOVA requires the variance on each side to be equal. And to check whether the variance is equal or not, we use the Levene's test of equality. It's as simple as that. Next, there is the repeated measure ANOVA. Again, if you remember, as Shirish told you, that I take one group and I take many recordings of the same variable. For example, if I am measuring EMG in the quadriceps muscle,
of one patient, I will not take just one reading, right? I will take 5 to 10 readings. That is what, not just me, that's what the guys who did the study did as well. So to check the variance in this, we use the repeated measures ANOVA. And to validate the result that we get from this repeated measures ANOVA, we use the Morshley's test. And next we'll see what Holmes-Sidek post hoc analysis means as we go through the results. And the significance value was set at alpha, which is less than 0.05, which is, I think, again, as in the pre-club meeting, we already discussed what p-value is. So the results. What if you remember the hypothesis uh, that was present at the start of the study was that there is less contribution from the corticospinal tracts and more contribution from the reticulospinal tracts. So what we should see is that all the factors that are related, all the parameters that are related to the corticospinal tracts, that is the MVC, the motor evoked potential MEP, all these should be negatively correlated to the to spasticity. And how do I measure spasticity? Through the modified Ashworth scale. And whereas uh, the start react response, that is the reticulospinal gain, should be positively related with the modified Ashworth scale or the spasticity. So we'll see if this is true or not, if they could calculate this or not. They found that, first of all, an important finding that they found was that spasticity is not present in all patients with incomplete spinal cord injury, at least in their tests. Only 66.7% or 20 people out of the 30 tests had showed spasticity. Next, the MVC in the quadriceps femoris muscle was reduced in. Okay, what did I say? MVC measures the corticospinal tract functioning. So it was reduced in spastic patients as compared to the others. Okay, and if you see, I've written post hoc analysis over here. Post hoc literally means after something, after something. So once I have collected the data and then I analyze it, that is called post hoc analysis. And wherever I compare anything or whenever I compare any groups, I have to use the Holmes-Sidek post hoc analysis. So that this is to validate this statement, they use the post hoc analysis. Next, again, MEP max was reduced in spastic as compared to controls and non-spastic patients. The slope of the MEP recruitment curve. Okay, if you remember that at every intensity of the transcranial magnetic stimulation, the motor evoked potential will go on increasing up to a certain point. There's a sigmoid curve basically, which is not very important for us to understand right now. So the slope of this curve is also drastically decreased in the spastic patients as compared to others. Whereas the reticulospinal gain was increased in spastic patients as compared to the others, controls as well as non-spastic. So this is actually, if I stop here, take a pause here and tell you, their hypothesis is actually getting proved right here through all these results. Notably, in the spastic participant, reaction time further decreased during the visual plus startle reaction time, but not during the VART or VRT. So, what did I tell you? If the startle reflex is involved, the reticulospinal system is involved because the reticular formation is involved. And if the reaction time to the visual plus startle reaction time is decreased, it means that the reticulospinal system is getting activated in the spastic patients, but not during any other reaction times. So as I already said, the correlations, the mass scores were negatively correlated to the MEP, MVC, and all other factors that measured the functioning of the corticospinal tracts. And at the same time, the MVC values were negatively correlated to the reticulospinal gain. And notably, if you see the p values, they are very, very good. As Nikhil said before, the p value below 0.05 is good. So these p values are really, really good.
And again, so in the discussion, what I'd like to say is that their hypothesis, they proved their hypothesis. It wasn't the decreased MVP and MVC means that the influence of corticospinal tract is reduced, as I've already mentioned twice, thrice before. The increased start react response means that there is an increased reticulospinal gain, means that the influence of spinal tract is increased. And now they have put down another hypothesis at the end of the study for other people to think upon, and that is that these effects are more pronounced in chronic incomplete SCI patients with lesser recovery. So, what they are doing, what the future implications of this study is that first you can have studies to find whether the extent of recovery is related to the changes in these tracts, is related to the extent of spasticity in patients. And another important question is whether the okay, so now what they have proved that there is lesser corticospinal and larger reticulospinal influences. But these two may not be related. They may be independent events happening at the same time. So, and studies may also take place where they try to find out whether these two changes are related to each other or not. So, towards the end of the presentation, these are the pros of the study. You can go through them. As I already said, the p values of the notable statistics are actually really commendable, and the objectives have also been fulfilled. So it's through right methodology. It's important to have right methodology and get good results, because I can always get good results with a bad methodology, but it's still a bad study. uh, Possible improvements. As I said, the sample size could be much more than 30. At the same time, they took only 15 age-matched controls. Why? You can recruit as many controls as you want, at least equal to the number of the tests that you have taken. At least 30 controls, but no, they've taken only 15. Then they, in the study, even if they have done it, they have not mentioned the sampling techniques, or they have not mentioned the inclusion and exclusion criteria. So it leaves us in a gray area whether this study is actually is good enough or not. And also, there are many studies that talk about the possible side effects of transcranial magnetic stimulation. So, headaches, nausea, vomiting, etc., etc. So, these have not been addressed or mentioned in the study. So, which could have been done, obviously. So, this is from an ethical perspective. So, that is it from my side. These are the references for the rationale of the study. And sorry for overshooting a little above my limit, but thank you very much. Thank you, Raghav. Uh, Excellent presentation. I would like to request Milind sir, Rakhi ma'am, and Anita ma'am to opine on his presentation. Shirish, can I talk or ma'am is talking? Can you hear me? Yes, ma'am. Ma'am, you may Yes, ma'am, you start. can. So you can Okay, start. okay. Yes, yes. At the outset, definitely excellent presentation. Okay, I mean, the study was also good, but even Raghav took all the efforts to explain those neurological variables. Because if you are reading the paper honestly for the first time, you really don't understand. I mean, even that cortical magnetic, how you will measure the variables and all, but he has really simplified it for the audience. That was the beauty of the presenter, and also he has well summarized all the results that are there. Okay, just for the benefit of the audience, he explained post hoc analysis on this, but just remember that your post hoc analysis usually comes when you are trying to compare more than two groups and you get a statistical significance. So that is where you would go for your post hoc, because to know actually where is the difference. If it is just two groups and comparison, you don't end up doing post hoc. Your statistical test will tell you whether it is significant or not significant. It is when you are going beyond two, okay, more than two groups, then your post hoc test and post hoc analysis comes into play. So that is what he was meaning about comparative assays. But in comparative also, you have to remember it is going to be more than that when you venture into all this. Post hoc also comes into picture when you are trying to stratify the data.
Okay, you have different strata and you want to this, that time also your each data, when you each strata, when you try to this, also your post hoc would come into the picture. Okay, so that's, and anyways, excellent presentation, excellent summarization, even excellent critique also, because he said about the sample size and all. But many times when you are doing this type of what should I say, investigational type of studies, where you're proning to capture even the physiological aspects to try to quantify, you may not actually be able to calculate the sample size, because most of the times you are the first one who is measuring all the variables at one go. So many times that sample size calculation you cannot do, because there is not, it's not there in the literature, and that is why then you end up the typical proof of concept type of studies, where you take 30 and 30, or you take the bare minimum which will give you the, so that is how you go about. Anyways, excellent job, Raghav. Well done. Too good. Over to Thank you very ma'am much. and Milind. Any other additional points they want to add? Ma'am, you are not No, audible. no Kindly comment. unmute yourself. No comment from my side. Good presentation. Good presentation. Thank you. Anita ma'am, kindly Anita ma'am. unmute yourself. Uh, Ma'am, you are still not audible. Kindly unmute yourself. Myself. Okay. Can you Yeah. hear me now? Yes, ma'am. Yeah. Yes. Yes, ma'am. Excellent presentation by Raghav. I really enjoyed, though I joined little late. I came home and then I saw the message, so I'm sorry for joining late. But I really enjoyed, and this post hoc test, he was talking, even I have done it recently. So what Dr. Raki said, I completely agree with her. Whenever we are comparing between the different groups, more than two groups, only then we do the post hoc test. So I was very delighted to listen to post hoc test, because I have done it myself few months back. So it was really nice. I enjoyed it thoroughly. Thank you, Raghav. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to request Pauras Mhatre to do his next presentation on breast cancer in transgenders. Pauras? Yeah, just a second. I'm presenting. Yes. There's some issue. Just a second. Is my entire slide visible? Hello? Yes. Yes. Yes, Pauras. Yes. Your entire So, slide is visible. shall I start? Good evening, everyone. I'm Pauras Mhatre, pronounced he or him, a first year MBBS student from St. G.S.M. Medical College and KEM Hospital. Today, I'll be presenting a study titled Breast Cancer Risk in Transgender People Receiving Hormone Treatment, a nationwide cohort study in the Netherlands. This study was published in the British Medical Journal in 2019. The short learning objectives of this session are: at the end of the journal club presentation, the audience should be able to interpret the research methodology involved in a retrospective cohort study done using national open databases, compare the incidence rates and causative factors of breast cancer in transgender people as compared to cisgender people, describe the breast cancer screening advices for transgender people, and plan a similar study to be done in the Indian population. The background for this study is: breast cancer is the most common malignancy in females, but it is rare in males. The lifetime risk in the general female population is 12%, and in the general male population is 0.1%. The molecular pathogenesis of breast cancer differs between sexes. For instance, cancers positive for human epidermal growth factor receptor 2, that is HER2, are rare in males, whereas high percentage of breast cancers in females express HER2. Then, transgender people experience an incongruence between the sex assigned to them at birth and their experienced or expressed gender. In the Netherlands, an estimated 1 in 2,800 birth assigned males and 1 in 5,200 birth assigned females identify themselves as transgender. A substantial increase in the number of referrals
for psychological counseling, for endocrine or surgical treatment, or a combination of those has been seen over the past 10 years. Transgender people can receive gender-affirming hormones, that is, sex steroids, to reduce psychological distress and to induce desired physical changes such as for body hair and body composition. In trans women, treatment usually consists of anti-androgens and estrogens, whereas in trans men, treatment usually consists of testosterone. The rationale behind this study is whether exogenous sex steroids influence breast cancer risk and pathogenesis in transgender people is not fully understood. It is known that sex steroids induce changes in breast tissue. During female puberty and in trans women receiving hormone treatment, mammary development includes duct and lobule formation and an increase in deposition of fat in the breasts. Some structural changes occur in the breast tissue under the influence of testosterone, such as an increase in fibrous tissue and the upregulation of potential oncogenes. Large prospective studies have shown that hormone replacement therapy increases the risk of breast cancer in cisgender postmenopausal women, in particular in those using both estrogens and progestrogens, which could suggest an increased breast cancer risk in trans women receiving hormone treatment compared with cisgender men. Currently, information about the risk of breast cancer in transgender people is limited. This study was hence done to gain more insight into the risk of breast cancer in transgender people receiving hormone treatment and the influence of exogenous steroids on the development of breast cancer. The objective of this study is to investigate the incidence and characteristics of breast cancer in transgender people in the Netherlands compared with the general Dutch population. The standard definitions of meanings are: transgender people are people for whom gender the person identifies with differs from the sex assigned to the person at birth, whereas cisgender people are the people for whom gender the person identifies with matches the sex assigned to the person at birth. Methodology: this was a retrospective nationwide cohort study conducted in specialized tertiary gender clinic in Amsterdam, the Netherlands. The study participants included 2,260 adult trans women and 1,229 adult trans men who received gender-affirming hormone treatment. The inclusion criteria were all transgender people who visited the gender clinic of the VU University Medical Center, Amsterdam, between 1972 and January 2016 for either psychological, endocrine, or surgical treatment. The exclusion criteria were individuals who never used hormone treatment or the start date was unknown, individuals who were younger than 18 years at the time of the study, individuals who used alternating estrogen and testosterone during the follow-up time because of regret about their transition. Also, as the data on breast cancer diagnosis were retrieved from the nationwide network and registry of histopathology and cytopathology in Netherlands, that is the PALGA, which covers all pathology diagnosis since 1991. So, individuals whose last visit to the gender clinic was before 1991 were also excluded. Coming to the steps of the methodology, first the ethical approval. The study was reviewed by the Ethical Review Board of the VU University Medical Center, Amsterdam. It was determined that the Medical Research Involving Human Subjects Act, that is WMO, does not apply to this study, and hence the necessity for informed consent was waived. All data were processed anonymously. Then screening. Identification of eligible participants according to inclusion and exclusion criteria was done. Next, coming to the data collection. Data about the age at start of hormone treatment, type of treatment, gender-affirming surgery, and medical history was collected from the clinic database. Data on the year of breast cancer diagnosis and breast cancer histology was retrieved from PALGA. To adequately calculate the follow-up time, data on mortality was retrieved from the Statistics Netherlands. After that, the statistical analysis was done. Data from trans women and trans men were analyzed separately. The statistical software and OpenEpi were used for the same. The mid-P exact test was used to calculate the 95% confidence interval of the data. The results: from a total of 6,793 transgender people as the population, after exclusion of ineligible participants,
A total of 3,489 transgender people were taken as the sample. Talking about the results, in the given sample, the median age was 47 years with an interquartile range of 31 to 57. Then for the same for the trans women were 51 years and for trans men was 39 years. The age at start of hormone treatment in years was 28 as the median and 21 to 38 as the interquartile range as an overall, and that for trans women and trans men was 31 and 23 respectively. Then total person time in years was 48,874 overall, 33,991 for trans women and 14,883 for trans men. The other data could be seen in the table and can be referred later. Moving on. The incidence of breast cancer in trans women. In 17 of the 2,260 trans women, a total of 18 cases of breast cancer were diagnosed, which included 15 invasive and 3 non-invasive. There was a diagnosis after a median 18 years of hormone treatment with an interquartile range of 12 to 27. The median age at diagnosis was 50 years. A higher overall risk of breast cancer was found compared to the Dutch cisgender men with a standardized incidence ratio of 46.7 with a 95% confidence interval of 27.2 to 75.4. A lower overall risk of breast cancer was found compared with Dutch cisgender women with a standardized incidence ratio of 0.3 with a 95% confidence interval of 0.2 to 0.4. Talking about the results of the trans men, in 4 of the 1,229 trans men, 4 cases of invasive breast cancer were diagnosed at a median age of 47 years with the interquartile range of 35 to 59 and after a median 15 years of hormone treatment. But no cases of invasive breast cancer were found. With an overall standardized incidence ratio of 0.2 with a 95% confidence interval of 0.1 to 0.5 in trans men, the risk of breast cancer was lower compared with Dutch cisgender women. Compared with Dutch cisgender men, trans men had a higher overall risk of breast cancer with a standardized incidence ratio of 58.9 with 95% confidence interval of 18.7 to 142.2. Now moving on to the discussion, let me summarize the results. There was an increased risk of breast cancer in trans women in the Netherlands compared with cisgender men. In both trans women and trans men, the risk of breast cancer was lower in the Dutch cisgender women. This suggests that the hormone treatment alters the risk of breast cancer in transgender people compared with initial risk based on their birth assigned sex. The median age at breast cancer diagnosis was 52 years in trans women and 46 years in trans men, both lower than average years of 61 years in the Dutch cisgender women. The HER2 receptor status in trans women was much higher than the expected in male breast cancer. Comparison with other studies and probable explanation of cause, the overall incidence for breast cancer for trans women and trans men combined in the current study was higher than the number found in the 2 previous studies. Both studies concluded that the risk of breast cancer in transgender people is comparable to cisgender men. The incidence in the first of the studies is in line with the current studies. However, in the other study, the breast cancer risk could have been underestimated because of technical limitations, resulting in overestimation of total follow-up time and not including people who underwent treatment for breast cancer in other hospitals. These limitations were addressed in this study. Then there was a younger age at time of breast cancer diagnosis in transgender people compared with cisgender women, which could be explained by genetic susceptibility. Then exposure to hormone treatment before breast cancer diagnosis was relatively short in trans women, suggesting a rapid development of breast tumors in a subset of people. The explanations could be either genetic susceptibility
or presence of undiagnosed hormone-sensitive cancer before treatment. In trans women, most breast cancers were of luminal type, suggesting that the tumors were driven in a cell autonomous fashion by the growth stimulatory actions of estrogens as well as progestrogens. As the androgens are known to inhibit progression of luminal breast cancer, anti-androgenic treatment and orchiectomy might have contributed to tumor initiation in the affected people. Now, the breast cancer screening advice would be, the current recommendation would be that trans women and trans men who have not undergone mastectomy should be biannually screened with mammography from age of 50 years and if they're using hormone treatment for more than 5 years. After subcutaneous mastectomy, monitoring of trans men with mammography is not considered feasible owing to the minimal residual breast tissue, and therefore self-examination is advised, although there is no evidence for effectiveness. Then risk for breast cancer in transgender people is still low in this study, especially not increased as compared to cisgender women. So awareness in both doctors and transgender people is of more importance than the starting of screening at a younger age or intensifying available screening. Also, discontinuation of hormone treatment in older transgender people can also be considered. Trans women and trans men who have not had a mastectomy are advised to undergo the same intensified breast surveillance as their close female relatives if the risk of breast cancer is increased because of familial predisposition. Then, transgender people who change their legal sex might not be automatically invited for population breast screenings, including breast cancer screening. And this has to be demarcatedly noted by the medical fraternity. Talking about the strengths of this study, novel insights into the risk of breast cancer in transgender people were obtained. Reported risk in the current study is higher than estimates from previous studies. This could be due to the cohort size and data quality, including the use of a national pathology database. Then there was an inclusion of people with a wide range of ages. The limitations and further scope could be, owing to the retrospective design of the study, information about hormone use, family history, benign breast lesions, breast density, genetic mutations, tobacco and alcohol use, body mass index, etc., is either missing or incomplete. Although these risk factors for breast cancer should not be underestimated, the most important difference between transgender people and cisgender people is the use of hormone treatment. Study of these factors could be done in more detail to investigate whether certain factors determine the observed risk in trans women. Also, the study participants with breast cancer did not necessarily undergo treatment in their particular medical center, and hence detailed data about the type and outcome of the treatment are lacking in most of the cases. Although this was not the purpose of the study, but it could be studied further in the future. Also, future studies could also investigate whether treatment outcomes of breast cancer in trans women are comparable to those of cisgender women. Then there is no evidence and data is present regarding this topic in the Indian context, and hence it would be suggested to do a similar study in the Indian context. Thank you so much for your time. Now questions, suggestions and feedback are welcome. Thank you, Pauras. I would request we can start with Anita ma'am if she's. Yeah, can you hear me, Pauras? Yes. Yeah. Yes, ma'am. This study has been done over such a long period. It is a retrospective cohort study. So, like the data, first the data from 1991 was collected from the databases of the gender clinic, and it was followed up using the national pathology database. So the actual study, the work was done over only short period, but the data was collected over a long period, means like from already existing databases. Okay, because I really wonder if it has been collected from, things will change over a period of time, and the authenticity of the data, but it is Netherlands, so
we can believe, because in India such a study, I will really wonder if it's possible. Exactly. Means like talking about the limitations of conducting the study in the Indian population is there that a national pathology database is not available in the Indian context, right? And also gender affirming like or sex reassignment surgeries are very rare in India, if I could say like that. Yeah, yeah, that's So what. so that And is a transgender limitation to people, we never conduction of even the pay study. a heed to them, and they are doing such good work. That's really commendable. Yes, Uh, definitely. yeah, I think it's a good presentation. Yeah, I can. Thank you I so want much, to switch ma'am. over to Dr. Raki. She can speak. Okay, thank you, ma'am. What Anita ma'am has highlighted is an important aspect. There is something called as health registries or databases, and health registries and databases are in fact now coming in India. Now, if you really go, there are even disease specific registries are there. Okay, and even all you will even get, but you will not get this way old data the where other countries are having. Yes, So our registries would be somewhere 5 year old, 10 year old, or something like that. yes, We are not, because these countries have started way before, so that is why their documentation, their archival facilities, and all is fantastic. yes, Today in India also, especially in the area of oncology cancer, you will get all cancer registries and cancer databases even for India. Okay, most of them are there, most of things are there, even similarly in liver hepatology also you will get. But I okay. agree, because we have starting now, that is why we will not get this way. We cannot analyze like 20-year or 30-year old data now, because we don't have the records only. Yes, Okay. Anyways, for us, excellent presentation, and well done. My just question to all the audience is there: is the audience benefiting? Because see, the point is that okay, this is an undergraduate journal club. So one who is presenting definitely will read the paper. Definitely will be putting more effort, making the PPT, trying to understand and trying to explain it for the benefit of the audience. But if the audience also feels they are not understanding certain terms, or there is not clarity enough on the PPT, they can ask doubts to the presenters, because exactly. presenter and that is how you will cherish the learning. Otherwise, what will happen? The one who is presenting is learning, others are just attending it, and maybe somewhere something some new terms you listen, you hear, that's it. But even if if you're not understanding the terms, please ask. Means at the end of the paper, the audience can ask questions. Okay, we didn't understand this variable, or why this was this way. You can ask, because the presenter may not be able to defend as well as the author, because obviously it is not presenter's concept or vision. Okay, but presenter, because he has read the paper well, he has done cross referencing, read the references well, therefore the learning will be more. Okay, anyways, excellent presentations today. It was my first time, I enjoyed. I didn't expect undergraduate JC to be that enchanting and cherishing. Really good job. Thank you so much, Good ma'am. job, team Aspire, also really well done. Good. Thank And you, about Anita the ma'am, also for attending. Thank you, and thank you, Milind, also. ma'am, about the point you're speaking about, Hmm. definition of certain terms and tests and all, the Huh. Aspire has kept a pre journal club and post Mitochondria. journal club discussion wherein we discussed Okay. all about this. Okay. No, post journal club actually will be benefiting, Yes, because maybe if I'm just a participant, I may not read the papers, yes, and I may, and even while reading, I may not understand at the first read. So yes, when I hear the presenter a simplified version making me understand, so then if I read the paper again, I may come up with more doubts and I may require more clarification. yes. So it's up to you. Good. Yeah, thank you so much, ma'am, for your feedback. Also, thank you to Anita, ma'am, for your feedback. Milind sir. You. Yeah. Milan sir has left. He said he has to leave. Okay. Okay, so if anyone else has any doubts, comments, or questions for presenters, or any conceptual doubts which they want to ask from the faculty members as well, you are free to ask. Otherwise, then we will proceed to the post club or else.
So does anyone Sirish, I have a what I would say, just this thing that you can post the paper beforehand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We post the we had paper sent beforehand them. only. You have sent the papers to all the this thing. Yes, ma'am. Those who have, Yes, ma'am. okay. This was just a suggestion because I really feel that one should read before listening to the presenters. Then it is more beneficial. We have sent the links of the papers a day before, and also Okay. all the designs and statistics, whatever the basics of designs and statistics were taken half an hour before the session for the students, so that they Okay. could understand the basics of the Very same. good. Excellent. That is really good. Yeah. Thank I you, think ma'am. it's a good you, ma'am. effort. Good effort. Okay. Thank you for inviting us. Thank you so Thank you, much, ma'am. Thank you, all of you. Thank you. Thank you so Thank you, much, ma'am. ma'am. ओके हो देन गया। अभी स्टूडेंट्स जिनको हमसे कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, प्रेजेंटर से, हमसे, जिससे भी कुछ डाउट हो। मतलब प्री क्लब में जो पढ़ाया उसका एप्लीकेशन अगर तुम्हें नहीं समझा हो प्रेजेंटेशन में तो प्लीज पूछ लो। मतलब अभी इसके बाद हम सीधा फेब में करेंगे जर्नल क्लब, एस्पायर ऑलमोस्ट काफी ड्राई रहेगा तब तक, तो अभी जितना भी डाउट्स वगैरह है पूछ लो। Yeah, and also like in the pre-journal club presentation, discussion, like incidence and incidence ratio was told, but like the statistics used in my presentation were standardized incidence ratio. So if anyone wants to know more about it, can ask. Is there a difference between an incidence ratio and a standardized incidence ratio? Yes, there is a difference. So like basically you compare it with one with which has been in a previous study, like how you quoted ki wo kaisa hai, right? Roughly. Please explain the difference. Yeah, I'll explain. So Yeah. see, incidence ratio is basically a ratio or comparison between any two test groups or whatever. Like as Shirish ke PPT or I think Nikhil ke PPT mein tha, right? Male to female in lung cancer. But what is standardized incidence ratio is that it is observed number of cases divided by expected number of cases. Now the term observed cases is like pretty understood, like whatever we get the value is the observed cases. But now what are expected number of cases is that it is the number of cases occurring to the community with the disease rate of the larger group. मतलब क्या करने का, जो बड़ा वाला ग्रुप है, बड़ा वाला ग्रुप कैन बी इधर अ नेशन और अ स्टेट. In the current study, the bada wala group was considered cisgender women and cisgender men. जो रेफरेंस में लिखा था ना, those were the बड़ा वाला ग्रुप. तो उसका इंसिडेंस रेट लिया और it was multiplied by the population of transgender people. That is the population of the study population. So the final formula for the expected number of cases becomes number of cases of reference divided by population at risk of reference into population of the study group. Is it understood? Yes. Have the students understood? Prashant, your voice is not clear. Like थोड़ा internet ठीक कर ले. Yes, understood. Thank you. ठीक है. और हाँ, कुंदावर का कुछ सजेशन है. Yeah, I read it. Noted. Thank you so much for the suggestion. Yeah, also there was a suggestion from my side कि कैसा हो गया था ना presentation में, try to read stats कम and give the interpretation ज्यादा, क्योंकि एज अ प्रेजेंटर हमको लगता है कि वो स्टैट्स अच्छे हैं, बड़े हैं, क्योंकि हमने वो जर्नल पढ़ा है, ठीक है, बट एज अ ऑडियंस जब ज्यादा स्टैट्स सुनते हैं ना तो वो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ बोरिंग, कि मतलब समझता नहीं है कि वो स्टैट्स कह रहा है, देन उसके इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस किया ना तो इंटरेस्ट आता है, देन यू कैन फोकस ऑन बिट ऑन कि मतलब दो स्टैट्स में डिफरेंस क्या है, यू कैन मेंशन कि मतलब
अगर तो 2 स्टैट्स दिखा भी रहा है प्रेजेंटेशन में, डोंट मेंशन कि वो कितना है, जस्ट से कि ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस है, इसमें कम डिफरेंस है, ये सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है, तो लोगों को जल्दी समझता है. Yeah, I think that was done like in the results summarize wala section. I did it. हाँ, वही, हाँ. अदर देन दैट बाकी अच्छा था काफी. बाकी किसी को कुछ पूछना है, लाइक काफी आज बड़े बड़े टर्म्स यूज हुए थे, तो फर्स्ट टाइम में लोगों को जल्दी नहीं समझता वो सब. तो Sorry if I bombarded with the terms. Like, no, it's fine. Like I'm asking audience, like if anyone else wants to ask any doubts, queries, or any comments as well are welcome. I had a suggestion. Yeah. When you are presenting now, try not to focus so much on explaining the concept of, like in the first presentation उसमें every test को बहुत ज़्यादा डिटेल में explain किया था. तो I feel focus more on the study and more on the methodology of the study than the concept of the subject. जैसे उसमें physiology बहुत ज़्यादा explain किया था. And I think more than that, study objectives पे ज़्यादा focus करो and study को ज़्यादा explain करो. Because that is the point of the journal club. That was just my suggestion. Okay. Noted. Thank you. Okay. So ये Harsh has a doubt. कि if a disease is curable, so will it be considered cured in case of prevalence? हाँ, तो अभी कैसा है ना, अभी prevalence का जो चीज है, consider it as a cup, ठीक है, which has a hole below. So उसमें जो भी मैं पोर कर रहा हूँ, दैट इज द इंसिडेंस. जो उसमें है वो प्रेवलेंस है, एंड वॉट एवर गोज आउट ऑफ इट गोज इन टू मैनर्स, वेदर पीपल डाई और वेदर पीपल आर क्योर्ड. So if you are increasing the cure rate, you are decreasing the prevalence. If the death rate is increasing, again prevalence is decreasing. So ये सारे factors के हिसाब से prevalence differ करता है. So if the disease is curable, of course the cure rate will determine कि उसका prevalence कैसा हो रहा है. ठीक है, समझा हर्ष? हर्ष, यस, क्लियर, ओके. बाकी आई गेस राघव ने वो ज्यादा इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वो उस मतलब मे भी मैंने भी उसको थोड़ा सजेस्ट किया था कि उस पर थोड़ा जा डिटेल में, अदरवाइज पूरा पेपर ऊपर से जाता, बट वो देन थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में चला गया, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया. बट नेक्स्ट टाइम से वी विल सीक टू फिनिश इट ऑफ इन लाइक गिवन टाइम. ठीक है. Yeah, I mean, I said that because starting में उसने इतना explain किया ना कि वो study तक आते आते concentration थोड़ा चला राइट, गया, तो वो study तो थोड़ा अच्छे से बैलेंस समझा नहीं. मेंटेन नहीं हो पाया. Yeah, that's it. Like he repeated a few things again and again, इसलिए थोड़ा खिंच गया वो. बाकी चलेगा. also, the thing is, in my presentation, I also use some particular terms like percent time, mid-P exact test, and interquartile range. So, is that needed to be explained or what? ये परसेंटाइल ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन कर दे. So, first of all, percent time, not percentile, it's person time. ओके. It's basically the time between the exposure and the outcome of interest. This is a concept of the survival analysis. So इसमें क्या होगा, exposure is the start of hormone treatment and the outcome of interest would be either death or diagnosis of breast cancer or the end of study period, like whichever comes first. Now if we give example of lung cancer, it would be the time between first smoking and death or a diagnosis or end of study period, whatever comes first. So this was about person time. Then talking about interquartile range is that basically when we collect the data, we arrange them into percentiles. Percentile, PERCENTILS, TILES.
Basically what we got for NEET scores and all that. We got percentiles, right? So from the 25th percentile to the 75th percentile, the range is known as interquartile range. Okay. And then mid-pay exact test. Basically, I'll tell what is an exact test. Mid-pay exact test isn't just an example of that. So what there are two types of tests. One is an exact test and one is an approximation test. Now in exact test हम क्या करते हैं? Significance of deviation from null hypothesis is exactly calculated. For example, p value is exactly calculated using all the values. Whereas for approximation क्या करते हैं? Like approximation test में basically approximate करते हैं and the sample size becomes like a limit of tends to infinity, where the approximation tests become exact. So exact test कब यूज करते हैं? जब स्मॉलर सैंपल होगा ना तभी यूज कर सकते हैं, वरना वो ज्यादा टायरिंग हो जाता है. लाइक इट डज नॉट बिकम फिजिबल टू यूज एन एग्जैक्ट टेस्ट, but an approximation test could be used in larger samples as well. Okay. Then example of an exact test would be Fisher test, mid-p exact test, etc. And as you all know, chi-square test or ANOVA, these are all approximation tests. तो क्या होते हैं, मतलब रियलिटी में उसमें क्या होता है मैं बताता हूं. For example, we take an exact test at an alpha value of 0.5%. Okay. Then if the same test is repeated many times over many samples, okay, where null hypothesis is true, so null hypothesis will be rejected at the most 5% of the time. Matlab, in short, error would be there after repeating at the maximum of 5% time. But whereas in approximation test 5% के ऊपर भी जा सकता है. राइट. बेसिकली एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेशन का जो वर्ड का मीनिंग्स है वही. तो इसमें जब तेरे स्टडी में इतना लार्ज सैंपल साइज था तो भी फिर वो लोग ने एग्जैक्ट टेस्ट क्यों यूज किया? उन्होंने एग्जैक्ट टेस्ट यूज कैसे किया? बिकॉज लाइक इट इज, हाँ, मतलब तेरे प्रेजेंटेशन में भी एग्जैक्ट टेस्ट कहीं था नहीं, इसलिए मैंने कहीं पे एक्सप्लेन किया नहीं. लिखा था इसमें. मतलब जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के टाइम पे मतलब कहाँ पे वो यूज हुआ है करके ही नहीं समझा. The mid-p exact test was used to calculate the 95% confidence interval. अच्छा, ओ मतलब कोई भी चीज का, ओके समझा, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला, राइट? हाँ, सो दैट फॉर दैट, ओके, गॉट इट. हाँ, सो वही. चलेगा. That's all from my side. ओके देन. सो गाइस, अभी नेक्स्ट जर्नल क्लब है ना, फेब में ही होगा मोस्टली, क्योंकि सबका एग्जाम्स है. जूनियर्स का दिसंबर, बाकी सबका जैन. सो सब एग्जाम के बाद ही नेक्स्ट जर्नल क्लब करेंगे. तब तक अगर किसी को कुछ भी देखना है, पढ़ना है, तो एस्पायर के ड्राइव पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल है, और कॉमन लिंक इंस्टाग्राम के बायो में भी अवेलेबल है और डिस्कॉर्ड पे भी अवेलेबल है. किसी को कभी भी कुछ भी चाहिए तो यू कैन मैसेज एनी ऑफ अस रिगार्डिंग एनी गाइडेंस रिलेटेड टू रिसर्च. ठीक है. और मुझे राघव को पूछना था ये क्वेश्चन कि मतलब ये टॉपिक मतलब जो सिलेक्ट किया CSI वाला, तो ये सॉरी SCI वाला, तो ये क्यों सिलेक्ट किया? और 2-3 टॉपिक जो सोचे होंगे वो क्या थे जिसमें से फिर ये फाइनलाइज किया? ये मेरा दूसरा ही टॉपिक था. द फर्स्ट वन वाज अबाउट आयुष एंड देन इट वाज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सो फिर मैंने वो रिजेक्ट किया. और फिर ऐसे उस दिन आई थिंक ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं, पर आई थिंक स्पास्टिसिटी के बारे में पढ़ रहा था, तो फिर ये पेपर मिला तो फिर चूज कर लिया. अच्छा. ठीक है देन. तो अगर हो गया हो तो फिर निखिल कंक्लूड करेगा, और किसी को कुछ कर रहा रहेगा तो देखो फिर. हाँ चलेगा, मेरे को तो कुछ मतलब कुछ है बोलना है तो बोलो भले. इस हो गया.
सुनना, मेरे को एक डाउट है। हाँ हाँ शिरीष, तूने वो अनोवा टेस्ट अभी एक्सप्लेन किया था, हाँ तो यू हैड एक्सप्लेन्ड यूजिंग बीपी, राइट? हाँ And then you said it's an interval scale. मेरे को मतलब BP is not a interval scale data, right? It's a ratio scale ना? हाँ, वो मतलब वो clear रेशियो नहीं था। इंटरवल थोड़ा इंटरचेंजेबली कोई यूज कर देता है, Okay, तो bye. सॉरी फॉर दैट, रेशियोज के लिए। हाँ वही, so वही डाउट था। हाँ, Cool, मतलब बट thanks. दोनों में टेस्ट सिमिलर ही यूज होता है, तो मैंने गलती से इंटरवल बोल दिया, सॉरी। Okay, okay. Thank you. या ठीक है, देन विल कंक्लूड। ठीक है, ठीक है। अभी बस फेब तक सुनना, हाँ बस ये हाँ बोलना मेरे को लास्ट में, बस वो अपन डेटाबेस का एक बार बता देते हैं गाइज। अभी हाँ तुम लोग के एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर हम लोग जैसे ही एग्जाम्स हो जाएंगे, सबके यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल सब हो जाएंगे, तो अराउंड फेब्रवरी से हम लोग सबको, जिसको भी रिसर्च करने की इच्छा है, उसके लिए, उन सबके लिए हम लोग एक डेटाबेस लॉन्च करने वाले हैं कि तुम लोग को हम लोग मतलब वो करेंगे कि बताएंगे कि कौन से उसमें तुमको रिसर्च अवेलेबल है, कौन से फील्ड में, कौन से सब्जेक्ट में, एंड कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो किसी को भी रिसर्च करना है तो बिल्कुल हमको अप्रोच कर सकता है। एंड तुम लोग के जैसे एग्जाम खत्म होते हैं, तुम हम लोग को बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा है, एंड हमको ये टाइम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कभी भी जब भी तुमको लग रहा है तुम फ्री हो। एंड फर्स्ट ईयर्स को मैं बोलूँगा कि थर्ड माइनर तक प्लीज़ रिसर्च को मत खींचो, कोशिश करो कि सेकेंड ईयर में हो जाए, क्योंकि थर्ड माइनर एंड अगर नेक्स्ट आ जाता है तो फिर थर्ड माइनर एंड फाइनल ईयर, आई थिंक मेरे को, मतलब एटलीस्ट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि तुमको अकेडमिक्स को टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो फिर ज़्यादा बेटर है कि तुम लोग सेकेंड ईयर में अपना रिसर्च कंप्लीट करो। तो इसीलिए बस मेरे को और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है देन, तो वो जब लॉन्च होगा तब लाइक वी विल लेट यू नो। एग्जाम के बाद बेसिकली एकदम फुल फ्लेज तुम रिसर्च कर सकते हो, दैट वी विल एंश्योर। उसके पहले भी अगर कभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो, कोई पेपर पढ़ रहे हो, नहीं समझ रहा हो, तो यू कैन मैसेज एनी ऑफ अस एंड वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है, चलो देन। सो थैंक यू फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, माय लाइक द एस्पायर ऑर्गेनाइजिंग टीम, महक, विधि, शर्विल एंड ऑल द पीपल हु आर देयर अभी के लिए। मीट यू ऑल बैक इन फेब। ठीक है, चलो, चलो Bye, बाय। everyone. Take care. All the बाय। best for exams. Thank you.